Hi students, welcome back to our online classes. Today we will start the new chapter number 28, Role of the State Government. India is a union of states. Each state is an individual organized community with a separate geographical area. The people living in state have almost similar culture and customs, but at the same time they are not independent nation states. They are all part of India. Accordingly, the Republic of India is a federal union of 28 states, 7 union territories and 1 national capital territory. You know that India is a union of states. बहुत ज़्यादा states है. Each state is an individual organized community with a separate geographical area. Each state has its own separate geographical area. But the people in living state have almost similar custom and cultures. Okay. Now we know that in the book it is written 28 states and 7 union territories. What is that? Now in India had 2019, India had 29 states and 7 union territories. You know that. But the country has only 28 states. Earlier it had in 2019 29 states were there, but now India has only 28 states because Jammu and Kashmir has been converted. Jammu and Kashmir has been converted. The country now has 9 union territories with Jammu and Kashmir as one new trend and Ladakh as the other. दैट मीन्स पहले हम लोग को 28 स्टेट्स था, उसके बाद तेलंगाना सब आ गए, उसके बाद 29 स्टेट्स हो गया था जम्मू एंड कश्मीर के साथ. लेकिन 2019 में 29 स्टेट्स हुआ था, लेकिन 2009 भी अभी 2020 में जम्मू एंड कश्मीर को कन्वर्ट कर कर और यूनियन टेरिटरीज बना दिया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर. तो उसमें से 28 अभी कितना स्टेट है, 28 स्टेट एंड पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन अभी अभी कितना है, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया है. ओके, सो ईच स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर एंड कस्टम्स. हर स्टेट को उस अपना कल्चर है, कस्टम है. सो नाउ वी विल लर्न व्हाई वी नीड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. हम लोग को क्यों स्टेट गवर्नमेंट चाहिए. You know that India as a country is governed by single central government. Only one central government is there, or the union government, which takes care of all matters of national importance. However, each state had its own problems and needs. I mean, India is a union, means a state union government है, नहीं तो central government है. लेकिन each state has its own problems and needs. Central government का अंडर है सब state, लेकिन हर स्टेट को अपना अपना प्रॉब्लम्स है और नेसेसरीज है. ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, इज इट. Therefore, we have government at the state level whose job is to make and give efforts to laws on subjects that deal with the specific needs of the state. The state government consults the central government as and when required. That means सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन हर एक स्टेट का प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया है. ये सब देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए. लेकिन जब चाहिए उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट के अनुसार, और नहीं तो उसको कंसल्ट कर कर स्टेट गवर्नमेंट चलता है. ओके, सो वी द ऑल द स्टेट नीड्स स्टेट गवर्नमेंट, इट्स ओन गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर स्टेट गवर्नमेंट भी चाहिए. सो नाउ वी विल लर्न द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. व्हाट आर द फंक्शंस, ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या ड्यूटी है. एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करता है, क्योंकि सब कुछ 28 स्टेट है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा स्टेट को देखभाल नहीं कर सकता है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को ये मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूट कर कर दिया हुआ है. ओके, सो वो क्या क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या करता है. द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स इट्स ओन लॉज एंड प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू द पीपल लिविंग इन द स्टेट. व्हाट दे डू,
they will make a state government, a union government, and otherwise and yeah, central government has its own laws. Same thing, the state government के अपना अपना laws बनाते हैं, and facilities है, provide facilities to the people to in living in the state, वो सब facility भी देते हैं. Then the local self government bodies like panchayat and municipalities help the state government in providing services and reaching the people. स्टेट में देखेंगे तो भी हम लोग को पता चलता है बहुत ज़्यादा स्टेट भी बड़ा है. बिहार स्टेट इस मीन्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मीन हर स्टेट बड़ा है. तो उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. दैट एंड ऑल वी हैव लर्नड ऑलरेडी. इस सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ये सब स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं. सेम थिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, NGOs ऑल्सो. NGOs मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करते हैं. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करते हैं. ओके, सो द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉस ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट लिस्ट? स्टेट का लॉ बनाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट मीन्स so in it includes the power to be considered by both the union and state government. In that state government concurrent list भी है, means list are there. laws कैसे बनाता है? state होता है, union list होता है, state list होता है, concurrent list होता है. union list means central government के लिए laws बनाता है. state list means state government के लिए. concurrent list means both state के लिए और union के लिए भी एक central government both together they will make. okay, that is the concurrent list. okay, it includes land reform, irrigation, water, education, public health and sanitation, etc. These are the functions. okay, what are the laws they are making? Laws means they have to do. Is it okay, land, first one is land reforms. So when India became independent, most of the agricultural land was owned by the landowners who were known as जमींदार. जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने के टाइम में पूरा लैंड्स किसके पास था? जमींदार के पास थे. ओके, दिस सिस्टम was abolished and laws was redistributed. Now all the farmers owned equal land on which they worked. The government took over some land for developing industries, mines, roads, etc. Waste lands were brought under cultivation. These measures are termed as land reforms and they vary with each state depending upon the climatic and other conditions. What is the meaning of land reforms? Land reform means when India was independent, that time it was on the hands of landowners. That means जमींदार के पास थे. उसके बाद गवर्नमेंट ये लेकर सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है. सब कोई कोई जमीन इंडस्ट्री के लिए, माइंस के लिए, रोड्स के लिए सब ले लिया. वेस्ट लैंड को भी कल्टीवेशन करने के लिए वो लोग यूज़ किया है. इसको हम लोग बोलते हैं दीज मेजर्स आर टर्म्ड लैंड रिव्यूमर्स. ये मेजरमेंट और सब अलग अलग जगह पर एक ही आदमी के पास नहीं था, ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इसको हम लोग लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं. ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज वाटर. नाउ ऑल्सो दे आर चेकिंग. पंचायत, म्यूनसिपैलिटी सब चेक करते हैं वो किसका पास है वो लैंड, वो किसका था और उसका प्रूफ है, सब कुछ चेकिंग करते हैं. अभी भी स्टेट गवर्नमेंट चेकिंग करते हैं. नेक्स्ट वन इज वाटर. Water is essential for life and it is duty of state government to supply clean drinking water to people in their homes. नेक्स्ट फंक्शन इज टू गिव द वाटर टू पीपल. इसलिए पीपल को पानी देना चाहिए, मीन्स क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर देना है उन लोग के लिए. So then a system of supplying clean water to home is created by the local self government bodies of the state government. State government का अंडर वर्क करते हैं local self government body. एक वाटर मीन्स सिस्टम बना दिया है वो सबको पानी पहुंचाने के लिए. दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाटर. नाउ नेक्स्ट वन इरिगेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? द स्टेट गवर्नमेंट प्लेस एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स सिंस द नीड फॉर इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट. द स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स डैम्स, canals, etc. to provide irrigation. What is the meaning of irrigation? They are giving the water for the agriculture, isn't it? What agriculture purpose, for the purpose of agriculture, the state government provide according to their geographical condition, climatic condition, उसके अनुसार पानी देते हैं. मीन्स पूरा एग्रीकल्चर करने, फार्मिंग करने के लिए मदद करते हैं. दैट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके,
Then another duty is that sanitation. What is the meaning of sanitation? Sanitation is the hygienic means of promoting health through prevention of human contact with the hazardous waste that can cause health problems. You know that now everywhere coronavirus is there, so mainly we say that cleanliness, isn't it? Clean hona chahiye every time you wash your hands and use the sanitizer, everything it is we are following that. So cleanliness is important, clean hona chahiye. ऐसे भी तो that will prevent, isn't it, prevent the means diseases. Waste materials, everything it is there, and they may be human and animal feces, solid waste, domestic waste, water, industrial waste and agriculture waste. इसके अनुसार क्या होता चाहिए, हो जाएगा, डिसीजेस हो जाता है, इसलिए तो पूरा सैनिटाइज करना है, मीन्स क्लीन करने के लिए वो किसका ड्यूटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट का ड्यूटी है, ड्यूटी करना है. ओके. Now personal hygiene also practices like a simple hand washing with soap and all. Now we know that personal hygiene, personal cleanliness होना चाहिए, नहीं तो कोरोना आ जाएगा बोलकर हम लोग बोलते हैं. नॉट ओनली कोरोना, अदर वायरस ऑल्सो, अदर प्रॉब्लम ऑल्सो विल कम इफ़ यू डोंट कीप द क्लीनिंग. ओके, अगर हम लोग क्लीन नहीं करते हैं तो दूसरा बीमारी भी हम लोग को आ जाता है. सो दिस ऑल द थिंग्स आर लुकिंग हुज फंक्शन इज दैट स्टेट गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड दिस. ओके. देन अनदर थिंग इज एजुकेशन. So education was included in the subjects of the concurrent list of the state in 1976. Since then the central government has tried to maintain a uniform standard of education throughout the country. Uniform standard means एक ही जैसे education central government करता है, that is so that it is concurrent list में आ गया है. state government को भी वो फॉलो करना है, central government भी फॉलो कर, central government both they follow that. So Sarva Siksha Abhiyan, midday meal scheme, etc. are aimed at attracting children to school. The state governments play an important role in carrying out these schemes with the help of the central government that provides them with money and food grains. That means state government करते हैं with the help of central government. Central government के help से state government ये सब follow करते हैं. That's one of the duty of the state government is education of the people. Okay. The next one is public health care. Public health care means in order to prevent the treat ailments, that means so diseases, to prevent the diseases we need proper health care facilities like health centers, hospitals, ambulance services, blood banks, etc., which provide the required services to the patients in times of need. Now we know about the coronavirus. Because of these means the hospitals are full and there is no vacant for the patients and everything, we know that. So every states need the for facilities, hospital facilities need. And another thing is that health care facilities need, health care centers needed, is it? So that will help the health public health of the people. Okay. So the health services called public services because the government has established many hospitals and health centers which are open for everyone. The health services are called public services. Okay. Then they are required to provide quality health care services either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. So health care centers सब कुछ फ्री में देना चाहिए, मीन्स पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर सब फ्री में होना चाहिए, नहीं तो लो कॉस्ट में देना चाहिए. बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे देंगे तो कॉमन नॉर्मल पीपल कान डू गो देयर, ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगा, उसकी वजह से उन लोगों का डेथ भी हो सकता है. इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, लो कॉस्ट में मिलना चाहिए. ओके. दैट आर डॉल. देन द स्टेट गवर्नमेंट बिल्ड्स हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजेस वेरियस हेल्थ कैंप्स in which the information is given to people in local languages. Health workers are employed to educate the people about the prevention of diseases. Nowadays we know that they are very much they are helping us, इसलिए अभी हम लोग को पता चलता है, कोरोना आने के बाद हम लोग को पता चला हेल्थ केयर सेंटर्स थे, नर्सेस, डॉक्टर्स सब लोग बहुत हेल्प मदद करते हैं. वो लोग बहुत ज़्यादा क्लासेस देते हैं, ये करना है वो करना है, मीन्स
मीन्स ये सब वो लोग कर कर देते हैं. So various institutions to train pharmacists, nurses and other health workers are set up by the state government. मालूम है हर स्टेट को मीन्स प्राइम मिनिस्टर से सब उन लोगों से बहुत अवार्ड मिला है. मीन्स ये ऐसे करने के लिए कोरोना मीन्स मेंटेन कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ करने के लिए सब बहुत लोगों को अवार्ड सब मिला है. इसे नर्सेस को भी अवार्ड मिला है. सो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है अपना स्टेट का हेल्थ केयर और हेल्थ प्रॉब्लम सब कुछ ट्रीटमेंट के लिए सब कुछ करना चाहिए. So the private health services. Next we learn about the private health services. What is the meaning of private health services? Besides the government run health centers, doctors run their own private clinics. You know that private clinics भी है government hospital के अलावा. Private hospitals and nursing homes provide specialized services. Many private laboratories offer special facilities like ultrasound, MRI, X-rays, etc. You know that हम कभी कभी हम लोग जाएंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी ज़्यादा कहा हो जाता है. प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में हम लोग देख सकते हैं. The patients have to pay a lot of money for their treatment and various tests also in private hospital. आप लोगों को मालूम है प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत पैसा देना चाहिए. So for the poor people it is not possible to get the treatment done at such private hospitals. प्राइवेट हॉस्पिटल में poor people means गरीब लोगों को जा नहीं सकता है, इसलिए गवर्नमेंट अच्छा फैसिलिटीज़ देना चाहिए. मीन्स स्टेट गवर्नमेंट फ्री में देना चाहिए, नहीं तो पुअर पीपल को एक्सैक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उन लोग को डेथ का भी कारण हो सकता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन लाइज विद द गवर्नमेंट. The private health care centers are run for profit making only, and the cost of the services provided are quite high. Poor people of the country remain deprived of the best medical care due to the financial constraints. That means health care and equality होना चाहिए. Equality means बराबर होना चाहिए. Means poor people और rich people. Means private hospital में rich people जा सकते हैं, उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा, लेकिन poor people को पैसा के कारण जा नहीं पाएगा, इसलिए उन लोगों को इक्वालिटी नहीं होता है. मीन्स बराबर नहीं करता है उन लोगों का अनुसार. लेकिन इसके वजह से फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों को ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है, उन लोगों का डेथ का कारण भी हो सकता है. ये इसमें से दैट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. ओके, so children, this is the small lesson we have learned the role of state government. What are the roles of state government का क्या रोल है, means what are the functions of state government and need for the state government, क्या के लिए हम लोग को state government चाहिए, and what are the functions of state government. Only little points are there. Okay, so read the lesson properly and find out the answers yourself. Okay children, thank you.